Hello students, how are you all doing? I hope you all are doing very well. So students, do you know who I am? I am your teacher and my name is Manisha Jha. स्टूडेंट्स, हम साइंस की बुक में क्या क्या पढ़ते हैं? साइंस में हम लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, वाटर, सन, मून, स्टार्स और भी कई सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो बच्चों, आज का जो चैप्टर है वो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड स्प्रेड ऑफ डिसीजेस। स्टेपिंग अप माइक्रोऑर्गेनिजम्स, स्प्रेडिंग ऑफ डिसीज, कॉजिंग जर्म्स, प्रिवेंटिंग डिसीजेस, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे। द डिसीजेस विच स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड contagious diseases. These diseases which are communicable by contact are called communicable diseases or infectious diseases. Tuberculosis, pneumonia, cholera, diphtheria, measles, flu, dynasty, malaria and skin diseases like ringworm are main contagious diseases. ये सभी contagious diseases होते हैं, लेकिन contagious diseases होते कौन से हैं? वो diseases जो एक person से दूसरे person के contact में आने पर वो फैलते हैं, spread होते हैं, उन्हें communicable diseases कहा जाता है, उन्हें contagious diseases कहा जाता है। Microorganisms, most diseases are caused by tiny organisms called germs. These microorganisms or microbes are very small living bodies. Microbes are so small that one cannot see them with naked eye. Contagious diseases are caused by four main kinds of germs, namely बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ एंड फंजाई। बच्चे ज़्यादातर जो डिसीजेस होते हैं वो छोटे छोटे जो टाइनी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके द्वारा फैलते हैं, उन्हें जर्म्स कहा जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स जो होते हैं वो काफ़ी स्मॉल लिविंग बॉडीज़ होते हैं जिन्हें नेकेड आई से देखना इम्पॉसिबल माना जाता है। जो कॉन्टेजियस डिसीजेस हैं वो उन्हें चार भागों में, चार जर्म्स में बांटा गया है। उन्हें बैक्टीरिया, these are single celled organisms. They are plant without chlorophyll. They may be round, spiral, rod-like or comma-shaped. They multiply very fast. Some bacteria are harmful and cause many diseases like pneumonia, tuberculosis, typhoid and diphtheria. ये सभी इस बैक्टीरिया की वजह से ही फैलते हैं। ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स इन्हें माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। Viruses. These are very minute organisms which are much smaller than bacteria. They can be seen only with the help of an electron microscope. They multiply very fast. They can cause flu, measles, polio and jaundice. Protozoa. They are single celled animals. They are larger than bacteria and fungi. They cause diseases like malaria and dynasty. Protozoa से malaria और dynasty होता है, इसे single celled animals कहा जाता है। Fungi, they are very small non-green plants, that is molds and rust. They generally cause skin diseases like patches on the skin, ringworm and sores on the tongue. Spreading of disease causing germs. Diseases causing germs are spread from one person to another through contaminated food, water, air and contact. Diseases may also be spread by the bite of certain insect. Through food, many diseases of the digestive system spread through eating contaminated food. Flies play an important role in contaminating the food. बच्चे ज़्यादातर जो diseases होते हैं वो digestive system में फैलते हैं contaminated food को खाने से, क्योंकि contaminated food पर जो flies होते हैं वो एक important role play करते हैं. Flies are the carriers of germs which spread diseases. They sit on the rubbish heaps and pick up diseases causing germs in their legs. Then they sit on our food and transfer the germs to the food. Eating the contaminated food causes diseases like cholera, typhoid, jaundice, dynasty, tuberculosis and food poisoning. Through water, water के through कैसे diseases फैलता है? Diseases of digestive system may also spread through the polluted water. Water gets polluted due to the following activities. Water कैसे polluted होता है? चलिए जान लेते हैं। Washing of clothes and utensils in or near drinking water.
bathing of human beings and animals near water source, improper disposal of sewage and industrial waste, defective drainage. Drinking of contaminated water causes many diseases like cholera, dysentery and diarrhea. Diarrhea can cause loss of water and salts from our body. This results into dehydration. It can be prevented by given oral rehydration सॉल्यूशन ORS टू द पेशेंट. बच्चों, अगर हम कंटामिनेटेड वाटर को पीते हैं तो उसमें से जो डिसीजेज होता है वो कॉलेरा, डायनेस्ट्री, डायरिया होता है. डायरिया जो होता है हमारी बॉडी के अंदर सॉल्ट और वाटर की कमी कर देता है, लॉस कर देता है. इससे डिहाइड्रेशन हो जाता है बॉडी में और इससे प्रिवेंशन पाने के लिए ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन को पिया जाता है, दिया जाता है पेशेंट को, जिसे ORS कहा जाता है. थ्रू एयर. When we sit near a person with cough and cold, we catch the same diseases from him by the next day. When a person suffering from cough sneezes or coughs, the diseases causing germs travel in the air. Diseases like influenza, flu, cold, smallpox, chickenpox and measles are passed on from one person to another through breathing air contacting the diseases germs. We should stay away from people who show symptoms of cough and cold. We should try to avoid infect the other people from our cough. So we should cover our nose and mouth with a handkerchief. When we have to sneeze or cough, we should not spit anywhere and everywhere because the sputum carries diseases causing germs. Through contact, we may get infected if we come in direct contact with an infected person. We may also get infected through contact with the towels, blankets, clothes, combs, handkerchiefs, books and utensils of the infected person. Diseases like ringworm, smallpox and measles spread through direct contact with the person suffering from these disease. अगर किसी person को ringworm, smallpox और measles है तो उस person के direct contact में आने से हमें भी वो disease लग जाता है. ये इस disease से हम direct contact में आ जाते हैं infected person के, अगर हम direct contact में आते हैं तो. और किसी भी जो पर्सन बीमार है, इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर हम उसका यूज़ किया हुआ टावल, ब्लैंकेट, क्लोथ्स या कॉम यूज़ करते हैं या हैंडकरचीफ यूज़ करते हैं तो वो बीमारी हमें भी लगने का खतरा हो जाता है. थ्रू बाइट ऑफ इंसेक्ट्स. Insects such as mosquitoes, flies and bugs suck the blood of a person when they bite him or her. When they bite a sick person, they suck the blood having diseases causing germs. These germs are further passed on to another person through biting. In this way, diseases like malaria, dengue, fever, yellow fever and sleeping sickness spread from one person to another. Plague is caused by rats. Preventing diseases. Diseases से हम कैसे prevention पा सकते हैं? It is an old saying that prevention is better than cure. We can thus prevent contagious diseases by taking certain precautions. The spreading of communicable diseases can be checked in the following ways. बच्चों, ये एक पुरानी कहावत है कि prevention is better than cure. तो इसे हमें अपनाना चाहिए. contagious diseases में हमें certain precautions लेने चाहिए. कौन कौन से? By isolating the patient, by keeping our home and the environment clean, by prevention in inoculation by the government plans. Isolating the patient. Isolation means separation of the patient from the other members of the family to avoid the spread of the diseases. Isolation का मतलब होता है कि patient को isolate कर देना, बाकी जो members हैं उनके contact से patient को हटा देना. The patient suffering from contagious diseases must be kept in a separate room. Only the person who looks after the patient should be allowed to go near and attend him or her. All articles used by the patient such as clothes, towels, comb and utensils should be kept separate. They should be disinfected properly. They should not be used by anybody else. Keeping our home and the environment clean. Following steps can be taken to check the growth and the multiplication of germs. किस तरीके से हम अपने home और environment को clean रख सकते हैं? The house and its surroundings should always be kept neat and clean. Do not spit and pass stool anywhere and everywhere. Wash your hands with soap or dry ash after defecation. Washrooms and toilets should always be kept clean and washed with enough water and phenyl or Dettol. Keep all drains clean and covered. Dispose of the waste materials properly. It would restrict breeding of flies. Rubbish and garbage should always be collected in separate bins and kept covered. Always wash your hands before handling food and water. Keep drinking water container covered. Always use a clean long
handled ladle to take out drinking water from the water container. By preventive inoculation and vaccination. Inoculation and vaccination increase power to fight diseases in the body. Resistance to disease increases in the body by prevention inoculation. Communicable diseases have been controlled to a great extent with the help of these preventive measures. Whenever there is an epidemic of cholera, typhoid or plague, it is in the fitness of things to get inoculated against them. Inoculation protects us against these diseases. Vaccination against smallpox should also be taken as a preventive measure. बच्चों हमें पहले से ही इनॉक्यूलेशन और वैक्सीनेशन जो है वो किसी भी बॉडी में किसी भी तरीके की डिसीज़ को से फाइट करने के लिए इनॉक्यूलेशन और वैक्सीनेशन लिया जाता है. अगर किसी भी तरीके का एपिडेमिक है जैसे कॉलेरा या टाइफाइड या प्लेग अगर फैल रहा है तो हमें ऑक्यूलेशन लेना चाहिए, हमें वैक्सीनेशन लेना चाहिए. The prevention vaccination that should be taken by a child against different diseases are as under. बच्चों जो प्रिवेंशन वैक्सीनेशन है जो किसी भी डिफरेंट डिसीजेस के लिए किसी भी बच्चे को लेना चाहिए, कौन कौन से एजेस के होते हैं और कौन कौन से वैक्सीनेशन उन्हें लेने चाहिए. यहाँ पर एज और वैक्सीन टू बी टेकन लिखा गया है. जैसे एट बर्थ BCG अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस 6 months to 9 months, ट्रिपल एंटीजन DPT अगेंस्ट डिप्थेरिया, टेटनस एंड whooping cough 3 doses at intervals of 4 to 6 weeks, polio 3 doses at intervals of 4 to 6 weeks, 9 months to 1 year, measles 6 months to 2 years, DPT and polio booster doses 5 to 6 years, DP if DPT not given, typhoid 2 doses. These vaccinations are given free in the primary health centers PHC. देयर आर नो वैक्सीन्स फॉर फ्लू एंड मलेरिया येट. बच्चों ये सारे जो वैक्सीन्स हैं वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स द्वारा फ्री दिए जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं फ्लू और मलेरिया के लिए अभी तक कोई वैक्सीन्स नहीं बना है. Government plans. The government health department has a responsibility to fight against the infectious diseases. We should help it in this fight. Our country has undertaken a big program of immunization. It is expected that all children will be immunized against childhood diseases. We should actively participate to help the government to carry out its plan to check the spread of contagious diseases successfully. We should take vaccination and other precautions against diseases. Whenever there is a case of any communicable diseases in the family, it should be brought to the notice of the local health department. The advice and instructions of the doctor should be followed seriously. बच्चों अगर कोई भी communicable disease अगर किसी फैमिली में किसी पर्सन को है तो ज़रूरी है कि आप लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट से वहाँ के डॉक्टर से इंस्ट्रक्शंस लें और उन इंस्ट्रक्शंस को सीरियसली फॉलो करें. चेक योर सेल्फ. नेम 2 डिसीजेज विच आर स्प्रेड थ्रू. बच्चों कौन कौन से डिसीजेज फैलते हैं किसके थ्रू, इसकी प्रैक्टिस आपको खुद से करना है. यहाँ पर Our government has succeeded in eradication of smallpox, which was earlier considered a fatal disease. Our government arranges for disinfecting the locality. Disinfectants are the chemicals used to kill the bacteria which spread diseases. Sum up now. The diseases which spread from one person to another by contact are called contagious diseases. Most diseases are caused by microbes called germs. Bacteria, virus, protozoa and fungi are diseases causing germs. Germs are spread from one person to another through food, water, air and by contact. Diseases may also be spread by the bite of certain insects. The spreading of communicable diseases can be checked by isolating the patient, keeping home and environment clean, preventive inoculation and by the government plans. Preventive inoculation increases resistance to diseases in the body. Disinfectants are the chemicals used to kill the bacteria. Vaccinations are given free in the primary health centers. There are no vaccines for flu and malaria yet. Practice zone assessment of learning outcome. Take the correct answer. Diseases causing organisms are called germs. बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. Fill in the blanks with the given words.
डिसीजेज दैट स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कंटेजियस डिसीजेस। बच्चों आगे की प्रैक्टिस इसी तरीके से खुद से कीजिएगा। Write T for true and F for false for the following diseases cause organisms cannot be seen with the naked eye. True. बच्चों इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं चैप्टर की मदद से इनके आंसर की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। अब आ जाते हैं क्रिटिकल थिंकिंग पर। सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया अंडर पावरफुल माइक्रोस्कोप्स इन योर स्कूल जूलॉजी लेबोरेटरी, ड्रॉ देयर शेप्स। बच्चों इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। क्रिएटिविटी जोन, फिजिकल मीडिया डेवलपमेंट, PMD, विजिट अ नियरबाई स्लम एंड फाइंड आउट द हेल्थ conditions the people there and the common contagious diseases and deficiency diseases among them। बच्चों आप अपने नियर बाई किसी स्लम में जाइए, वहाँ पर जो हेल्थ कंडीशन है लोगों की, उनमें जो कॉमन कंटेजियस डिसीजेज हैं, डेफिशिएंसी डिसीजेज हैं, उनके बारे में पता कीजिए और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। स्टूडेंट्स, आई होप आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करते रहिएगा।